अरे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? दिल्ली का मौसम थोड़ा ठीक हो चुका है बारिश होने की वजह से. What we would be doing is this would be a class that would be once a week. आपको देख रहा है उधर कुछ काफी चीज आई विल बी राइटिंग ऑन बोर्ड तो प्रॉब्लम हो जाएगी. This would be a class that would be once a week. अभी 7-8 क्लासेस हम once a week लेंगे. उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो जैसे भी ऑल्टरनेट करना हुआ ऑल्टरनेट कर देंगे. अगर जरूरत पड़ी हफ्ते में 2 क्लास कर देंगे. ठीक है. व्हाट वी वुड बी कवरिंग इज हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, रिव्यू, साइंस रिपोर्टर, इंडिया बुक, इकोनॉमिक सर्वे, एक चीज और सोर्स होगा जो भी कवर करेंगे. देयर वुड बी 11 डिफरेंट सोर्सेज वी वुड बी कवरिंग एंड दीज two things are there. The current affair that would be covered would be of 3 years. Last 2 years मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इस जून से पहले 2018 से पहले these would be those current affairs which were important but which had not been asked. Important थे लेकिन पूछे नहीं गए. That could be asked at any point of time. And this would be very comprehensive starting from June 18 to May. या मई जून जैसे भी होगा. Additionally, we would be covering this part. कुछ 5-7 क्लास मैक्सिमम लगेंगी इस पर क्वेश्चन कवर करेंगे. Rest of the classes would be thoroughly focusing upon this. जितना भी पढ़ रहे हो आप ग्लोबल ज्ञान मार्केट में जो मिल रहा है करंट अफेयर के नाम के ऊपर, I take a personal responsibility of covering each and everything. Personal responsibility मतलब सर 4-5 इंस्टीट्यूट के नोट्स जो आप उठाना चाहते हो उठा लेना. Let 5 classes happen. मेरे को बैकग्राउंड कवर कर लेने दो जिसमें आपकी मनोरमा जब तक आएगी उससे पहले हम खत्म कर चुके होंगे क्योंकि मनोरमा इज अ वेरी स्टैटिक बुक. कुछ नहीं चेंज होता हार्डली. इकोनॉमिक सर्वे इंडिया बुक में थोड़ा पता चेंज हो जाएगा. व्हेन दिस स्टैटिक पोर्शन इज कवर्ड उसके बाद आपको एक भी चीज नहीं होगी विच यू विल थिंक कि पड़ोसी को आता है और आपको नहीं आता. ठीक है. और कुछ ऐसी चीजें भी आपको ब्रह्मस्त्र दे देंगे जो सिर्फ आपको आता होगा, टोटली यूजलेस होगा. ठीक है. अगर आपसे भी इधर उधर की चीज पूछी यार ये मैं भूल गया ये बताना, अगले 2-3 महीने वो बंदा आपके मुंह नहीं लगेगा क्योंकि उसको आप डिप्रेशन में ले आओगे. दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नीडेड जब आपको फरवरी मार्च के बाद ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी. करंट अफेयर्स वुड बी कवर्ड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. एक बात पक्का है कि अगर आपको नहीं आता होगा पड़ोसी को पक्का नहीं आता होगा. पड़ोसी आई मीन टू से चाहे कोई भी बैठा हो पूरी क्लास में आगे पीछे वाला, इट वुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. 2 years पहले बड़ा कवर किया जाएगा जो पहले चल रहा था. दैट वुड बी कवर्ड मैक्सिमम 5-7 क्लास में वाइंड अप. उसके बाद जो भी होगा करंट चल रहा होगा. सेकेंडली, थर्डली, इफ यू वांट एनीथिंग टू बी कवर्ड बाय मी, जो आपको लगा कि ऐसा ये कवर नहीं हुआ XYZ किसी के भी नोट्स हो, मैं बड़ा ओपन हूँ, बड़ा फ्रैंक हूँ, किसी के भी नोट्स ले आना. ठीक है. अगर मेरे को लगा यार वहां से 4 पॉइंट जो हमारे काम के हो सकते हैं, आई रीड एंड कवर. कोई भी मैगजीन होता है, दिस वुड बी 100% फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. डू नॉट थिंक कि आपको मेंस का कुछ वहां पे मिलेगा. कोई भी नोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनी इंस्टीट्यूट, कुछ किसी के भी नोट्स हो सकते हैं जो जहाँ बाहर मैगजीन जो मिलते हैं. एवरी मैगजीन वुड बी हैविंग कितने पेज होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 80 तो होती हैं. कितना हो गया? यही. और सब लोग बोलते हैं 1 मैगजीन इज नॉट सफिशिएंट. ये भी पक्का है. एक तो इतने पेज हो गए मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लो, मेरा मैथ वीक है. और उसके बाद भी हवा नहीं लगती. बात तो ये है ना, चलो 2 मैगजीन कर लो फिर भी काम हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ पता नहीं लगता. दिस इज वन थिंग. whatever is available. और इस पूरे के पूरे 80 पेज में से अगर फ्री की बात करें तो मैक्सिमम 3 या 4 ही पेज होते हैं, इससे ज्यादा पेज नहीं होते फ्री के. क्योंकि पूरी इतनी बड़ी न्यूज होती है, फ्री की लाइन कितनी होती है उसमें 2 पढ़ने वाली.
और कभी कभी भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है वो हम पूरा पढ़ लेते हैं और वो 2 लाइन सोते सोते पढ़ लेते हैं, पता नहीं लगता, जो इंपॉर्टेंट होती है वो निकल जाती है। टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स आई एम देयर फॉर दैट, ठीक है। और क्योंकि 80 पेज में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, पूरे पेज में इंडो यूएस के रिलेशन में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 लाइन ही होती है, तो 4-5 2-3 पेज पढ़ते हो। एनवायरमेंट का आधा पेज आता है, कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख पढ़ने वाली सिर्फ 1 लाइन होती है। मैं सिर्फ 1 लाइन ही डिक्टेट करवाऊंगा। डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं पूरे का पूरा आपको इतिहास बताऊंगा प्री के लिए और फिर कुछ ना कुछ आगे सारे ये नहीं, वो नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, इसको रट्टा मार के चले जाओ, और रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। प्री इफेक्ट है, कौन कहाँ पे क्या मिलता है, दैट इज टोटली फैक्चुअल डिटेल्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, एवरी गवर्नमेंट स्कीम्स वुड बी कवर्ड इन वन क्लास, विल ट्राई टू कवर अप वन मिनिस्ट्री। स्कीम्स में मिनिस्ट्री के हिसाब से करवाऊंगा। Whenever you would be writing a scheme, उसके पीछे नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे विल कम, बजट विल कम, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हमें क्रॉस करके कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ सकता है। आफ्टर राइटिंग एवरी स्कीम लीव 3 to 4 लाइन, समझ रहे हो। और वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर बोलोगे सर मैं कहाँ पे लिखूं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर स्कीम लिखने के बाद 3-4 लाइन छोड़ो, डेफिनेटली कई बार उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, किसी अलॉटमेंट का फर्क पड़ सकता है या किसी और प्रोविजन का फर्क पड़ सकता है, एंड नंबर न्यू थिंग्स कैन बी एडेड। 3-4 लाइन हर स्कीम के आगे छोड़ो, इन एवरी क्लास 1 या 2 मिनिस्ट्री वुड बी कवर्ड, ठीक है। एंड दिस, ये तो बेसिक्स है जो आप आगे पीछे करवाओगे, दैट विल बी कवर्ड। कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट करें, चलो। First, start off with the government schemes only. Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development. आजीविका डैश नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगर यहाँ पे वर्ड रूरल है तो मिनिस्ट्री भी रूरल डेवलपमेंट की होगी, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझो, द स्कीम लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सुनो फिर उसके बाद लिख दो। द स्कीम हैज बेसिकली बीन लॉन्च्ड इन द रूरल एरियाज विद द एम टू एंड और टू रिड्यूस पॉवर्टी। रूरल एरियाज में पॉवर्टी कैसे करेंगे? द रूरल एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर एंगेज इन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर को छोड़ के ऑल्टरनेटिव स्किल डेवलप करेंगे उनमें। रूरल एरियाज में स्किल डेवलप करेंगे। अगर स्किल डेवलप करेंगे, देयर वुड बी 2 थिंग्स दैट वुड बी हैपनिंग। अगर स्किल डेवलप करेंगे, देयर वुड बी 2 थिंग्स दैट वुड बी हैपनिंग। ऑन द वन हैंड, द पर्सन वुड बी इन अ पोजीशन टू गेट एम्प्लॉयमेंट एट सम प्लेस। ऑन द अदर हैंड, अपनी भी की दुकान खोल सकता है। एम क्या हुआ? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। रूरल एरियाज में लाइवलीहुड प्रमोट करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उनमें कुछ स्किल डेवलप करना है। आफ्टर डेवलपिंग द स्किल, व्हाट वुड बी डन? द पर्सन वुड बी एलिजिबल आइदर फॉर अ वेज एम्प्लॉयमेंट और फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट में भी प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट, दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन सपोर्टेड बाय अ वर्ल्ड बैंक। ये प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है विद क्यों? रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। रूरल एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है विमेन्स की, क्योंकि लिविंग सर्टन एरियाज इन मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज दे आर द विमेन्स हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, देयरफॉर विमेन बिकम द मेजर फोकस ऑफ दीज एरियाज। कोई प्रॉब्लम? लिखो जी। अच्छा, द स्कीम इज देयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। देखो, फर्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस पॉवर्टी। टू रिड्यूस पॉवर्टी। सेकेंड पॉइंट, बाय एनेबलिंग द पुअर। सेकेंड पॉइंट, अब पॉइंटर फॉर्म में लिखना है, कुछ पैराग्राफ में नहीं लिखना। बाय एनेबलिंग द पुअर हाउस होल्ड्स टू एक्सेस ACCESS to access gainful self
उसको बुलाना पड़ेगा, मिल गया। टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट and skilled wage employment opportunities. To access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. Third point, it results in improvement in their livelihood ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। अगर आप किसी को स्किल दे दोगे तो सस्टेनेबल बेसिस के उसको आप लाइवलीहुड दे रहे हो। थर्ड फोर्थ पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड दीन दयाल अंत्योदय दीन दयाल अंत्योदय योजना -NRLM। फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम, हाईलाइटेड। सेकेंड पॉइंट को और फिफ्थ पॉइंट को हाईलाइट करो, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम। सिक्स पॉइंट, ऑर्गेनाइज रूरल बीपीएल, इसको भी मार्क करो, ऑर्गेनाइज रूरल बीपीएल people into self-help group, organize rural people BPL into self-help group, rural below poverty line people into self-help group. Sir, organize rural BPL into self-help, हाँ जी। Next 7, make them capable of, next point, make them capable of self-employment, make them capable of self-employment. Next point, by providing capacities such as information, knowledge, skill, tools, finance. Next point, important, special focus on women empowerment, including promoting farm and non-farm, special focus on women empowerment, including promoting farm and non-farm based livelihoods for women farmer in rural areas, Next point, implemented across the country, except Delhi and Chandigarh. Next scheme, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना. ग्रामीण फिर रूरल मिनिस्ट्री होगी. एक्सप्रेस मतलब दे वांट, वी नॉर्मली से कि कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस XYZ चलता है, तो मतलब द एम इज टू प्रमोट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज. एम क्या है? एक्सप्रेस से हमें याद रखना आसान है. द एम इज टू प्रमोट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज.
अगर रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है तो कोई तो उसको चलाएगा ही. फॉर एग्जाम्पल 3 व्हीलर है, कुछ भी है, कोई तो चलाएगा ही. उसको चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, वो पहले खरीदने के लिए. तो 2 points become simultaneously. Firstly, the government will have to provide certain financial assistance, then only that would be there. So therefore, interest-free loan is being provided under the scheme. Second point, कोई problem? Third point, क्यों? Because the aim is to develop alternate livelihood to the people. Alternate livelihood कैसे करेंगे? By providing 3 wheelers और 3 या 4 wheelers या e-rickshaws, जैसे यहाँ पे e-rickshaw चलते हैं, that would be provided. The scheme has been there for 3 years, starting from 2017-18 to 2020 तक, 17 से लेके 20 तक ये स्कीम है. And the scheme will be implemented under in various 250 blocks. Last point, it is subsumed under later on Deen Dayal अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसी का पार्ट बन चुका है. मैं रिपीट करता हूं सबके सब पॉइंट्स. फर्स्टली, द एम इज टू डेवलप अल्टरनेट लाइवलीहुड टू द पीपल इन द रूरल एरियाज. एक्सप्रेस से हमें याद पता लगता है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट से 2 चीज है, एक तो आपको लोन फ्री देना पड़ेगा, किसके लिए? 3 या 4 व्हीलर के लिए, ऑन द फर्स्ट हैंड, ऑन द सेकंड हैंड आप ई रिक्शा के लिए. लाइवलीहुड डेवलप कर पाओगे, इंटरेस्ट फ्री लोन दोगे, 3 साल के लिए स्कीम है, पूरी कंट्री में नहीं इंप्लीमेंटेड है, 250 ब्लॉक्स में इंप्लीमेंटेड है. कोई प्रॉब्लम? सबस्यूम हो चुकी है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में. क्लियर? लिखो जी. फर्स्ट पॉइंट, एम टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड to the members of self-help groups. To the members of self-help groups. Second point, by facilitating them to operate, by facilitating them to operate, Praveen, lost one. Facilitating them to operate public transport services in backward rural areas. Next point, it is a sub scheme under Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM. Sub scheme under Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM, National Rural Livelihood Mission. Next point, it will provide safe, affordable and community monitored, provide safe, affordable and community monitored rural transport services like e-rickshaws, 3 and 4 wheelers, 3 wheeler, 4 wheeler, to connect remote villages. To connect remote villages. Next point, these vehicles connect villages with key services and amenities. Including access to markets, education and health for overall economic development. Next, will be implemented in
will be implemented in 250 blocks, 250, in the country on pilot basis. In the country on pilot basis. Next, for a period of 3 years, for a period of 3 years from 2017 to 20. Next, the community-based organization is proposed to provide interest-free loan. The community-based organization is proposed to provide interest-free loan from its own corpus to self-help groups group members for purchase of vehicle. For the purchase of vehicle. Next scheme. Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana. It is the scheme that is again catering to the aims and aspirations of the rural youth. ग्रामीण यूथ के लिए है. अगर यूथ के लिए फोकस है, there will be certain age limit also, under which some certain provisions can be provided. The age limit is 15 years to 35 years. Catering to the aims and aspirations of the rural youth, 15 to 35 years, what would be done? They will be given some skill development so that they can be made economically independent. Rural youth, firstly. Second point, there are certain state-specific schemes which have also been launched under this. For example, Himayat. कहाँ पे है? It is a scheme which caters specially to the youth, rural and the urban youth, basically दोनों के लिए है, in the state of Jammu and Kashmir. Second is Roshni. This is a scheme which is there in the left-wing extremist districts, 27 left-wing extremist districts which are spread over 9 states. Extremist affected districts है वो है. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना स्कीम है जो बेसिकली रूरल यूथ के लिए है. उनमें कोई स्किल डेवलप करना है सो दैट अल्टरनेट लाइवलीहुड कैन बी अचीव्ड. पर सर्टन एरिया जैसे फॉर एग्जांपल हिमायत हो गया, द यूथ ऑफ बोथ रूरल एंड द अर्बन एरिया, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है. द रूरल यूथ एंड द अर्बन यूथ इज बीइंग टेकन टू कंसिडरेशन फॉर फुलफिलिंग देयर एम्स. लिखो जी. फॉर एडिंग डाइवर्सिटी to the incomes of rural families, Second point, cater to the career aspirations of rural youth. Caters to the career aspirations of rural youth. Third point, transforming the rural poor youth into an economically independent transforming rural youth into an economically independent and globally relevant workforce.
into an economically independent and globally relevant workforce. Next point. Focused on rural youth. Focused on rural youth aged between 15 to 35. Aged between 15 to 35. Fifth point, Himayat, 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 dash, a special scheme for rural youth and urban youth. A special scheme for rural youth and urban youth of Jammu and Kashmir. अकेला हिमायत भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, रोशनी, ROSHNI, रोशनी, dash, initiative for rural youth in 27 left-wing extremist districts. In 27 left-wing extremist districts across 9 states. Next, मनरेगा. स्कीम कब शुरू हुई? Started in 2006. कितने एम्प्लॉयमेंट डेज है? 100 days. And that was made, it said that guaranteed right to work was given firstly. And अगर आप काम करोगे तो certain wages will also be given. कितनी वेज मिलेगी? This is the problem. नहीं, 100 रुपए इसमें कौन काम करता है? कितनी भी वेज मिलेगी, that will be linked to something. What is that something? कौन से इंडेक्स के साथ लिंक करी जाएगी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर. इसके साथ लिंक करके उस इंडेक्स के हिसाब से आपको वेज मिलेगी. फर्स्ट, सेकंड पॉइंट. थर्डली, काम क्या करेंगे? इट वुड बी द क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेबल एसेट्स. कुछ ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करेंगे. फॉर दैट ड्यूरेबल एसेट कैन बी एनीथिंग. गांव में लोग हैं, स्किल्ड लोग नहीं होंगे. Therefore, it would be unskilled manual work that would be done. Employment देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि employment बहुत दूर मिल जाए. The employment has to be given within an area of 5 kilometers only. जब आप डिमांड कर रहे हो. Next thing, अगर employment नहीं मिली 15 days में, आपको unemployment allowances भी मिलेंगे. That good unemployment allowances would be given. Next point, social audit will be done. कितने बार किया जाएगा? सोशल ऑडिट विल बी डन ट्वाइस अ ईयर. हर 6 महीने के बाद उसका सोशल ऑडिट किया जाएगा. तो प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट हैज बीन आल्सो बीन मेड. मोर देन 65% ऑफ द वर्क दैट इज डन अंडर द स्कीम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क्स. इरिगेशन हो सकता है, वाटरशेड हो सकता है, उसके लिए रोड कनेक्टिविटी हो सकता है, कुछ भी इरिगेशन के रिलेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट, द विमेन शेयर फॉर द वर्क इज 33%. कुछ और जो काम करने लगे पे हुए हैं. एससी का शेयर है शेड्यूल कास्ट का 20% एंड शेड्यूल ट्राइब का 17%. द स्कीम इज मेनली इंप्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत. कोई प्रॉब्लम? रिपीट करूं, 2006 में स्कीम चली है. 100 दिन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट 5 किलोमीटर तक आपको देना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो 15 दिन में आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाएगी. एम्प्लॉयमेंट करोगे तो कुछ पैसा मिलेगा. दैट विल बी लिंक्ड टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर. जब काम हो रहा है या नहीं सही हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करेगा ग्राम पंचायत. हर 6 महीने के बाद उसका ऑडिट किया जाएगा. सही के नहीं? लिखो जी. यस, बिल्कुल. गारंटीज. First point, guarantees 100 days of wage employment. Guarantees 100 days of wage employment in a financial year. First point. Second point, to a rural household
whose adult members volunteers to do unskilled manual work. Unskilled manual work. Third point. Aims to guarantee right to work. Fourth point. All willing rural citizens are eligible. Next, fifth point. Focus on the creation of durable assets. Focus on the creation of durable assets as per local need. Sixth point. Provides for social audit of performances. Provides for social audit of performances at least once in 6 months. At least once in 6 months. Seventh point. Wages are linked to sixth और seventh point को mark करो. Wages are linked to consumer price index, CPI, agricultural labor. Consumer price index, agricultural labor. Eighth point. Employment to be provided within 5 kilometers of residence. Next, minimum wages are to be paid. Next point, important mark करो. If work is not provided, if the work is not provided within 15 days, within 15 days of applying, comma, applicants are entitled to an unemployment allowances. Next point. Implemented mainly by Gram Panchayats. Next point. Started in 2006. Full stop. More than 65% of the work. More than 65% of the work is linked to agricultural and allied activities. Is linked to agricultural and allied activities. Next. Allied, ALLIED, allied activities. Next. Scheduled caste workers have constituted about 20%. Next point. Scheduled tribe workers are about 17%. Next point. Statutory minimum limits for women's share. Minimum limit for women's share of work is 33%. Next, Pradhan Mantri Awas Yojana.
ग्रामीण. Now, the scheme started in 2016 after replacing इंदिरा आवास योजना. उसको रिप्लेस करके आवास का मतलब होता है घर. The objective is to provide as a mission to provide housing to all. Housing has to be provided to all, and that housing has to be provided by 2022. Housing कैसे होनी चाहिए? It has to be affordable, environment friendly, and a pakka house has to be provided. If a house has to be constructed, you need to give financial assistance. The financial assistance would be given to the amount of 1,20,000. Normal areas में होता है, और hilly areas तो दूसरे areas में 1,30,000 assistance would be given. Scheme is implemented in almost every part of the country except Delhi and Chandigarh. Now, certain people has to be selected. जिसको financial assistance देनी है, सबको तो financial assistance दे नहीं सकते. Every person is not eligible. The people would be selected on the basis of social economic caste census that was conducted in 2011. No problem. On the basis of that, people would be assisted and financial assistance would be given, and the entire payment would be done a direct benefit DBT transfer होगा, direct transfer किया जाएगा. And last point, it provides for skilling of the 5 lakh rural masons. 5 लाख जो रूरल एरियाज में या masons उनको ही स्किल किया जाएगा ताकि वही काम कर सकते हैं. Now, अगर घर बनाना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, घर का लिमिट भी होगा. Earlier the limit was 20 square meter, that has been raised to 25 square meter with a provision for the cooking space होना चाहिए. कोई प्रॉब्लम? रिपीट करता हूँ. 2016 की स्कीम है, चलाई, रिप्लेस करा इंदिरा आवास योजना. प्रोविजन क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल. हाउसिंग करना है तो टाइम लिमिट दिया है 2022 तक. फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1,20,000, 1,30,000 लोगों को दी जाएगी. वो लोग होंगे जो सिलेक्ट करे जाएंगे. एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस. गांव में घर बनाना है, द पीपल वुड आल्सो बी विल नीड सम, फॉर एग्जांपल मिस्त्री या कुछ और लोग चाहिए होंगे. द अटेम्प्ट वुड बी मेड कि मैसन्स कैन बी डेवलप्ड ट्रेन्ड विद इन द विलेज एरिया इटसेल्फ. लिखो जी. यस, बिल्कुल. अब चंडीगढ़ चले जाओ, आपको लगेगा कहीं और आ गए हो. आप अंडमान निकोबार चले जाओगे या लक्षद्वीप, कहीं पे और आओगे. लेकिन यहाँ पे और स्कीम्स चल रही होती है. ऐसा नहीं कि इन एरियाज में जैसे चंडीगढ़ इज एंटायरली डिफरेंट. आगे यहाँ पे एक बैकवर्ड, कुछ दिल्ली के आसपास में, तो अब यहाँ से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे चले जाओ, गाँव शुरू हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल छतरपुर हो गया, साउथ एक्सिया, वो काफी डेवलप्ड एरियाज है, लेकिन रियलिटी में तो गांव ही है ना. ठीक है, अगर है उसके साथ ही है छतरपुर, वो गांव है. ठीक है, और छतरपुर के आगे वाला जो भी एरिया है बहुत वेल डेवलप्ड है, वेरी रिच पीपल. सबसे छोटी गाड़ी है उस एरिया में मर्सिडीज होती है, लेकिन गाँव. ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर वहां पे कुछ झुग्गी झोपड़ी है, उनके लिए एक अलग से स्पेसिफिक स्कीम सरकार चलाती है. लिखो जी. The objective of housing for all mission in rural areas. Housing for all mission in rural areas. Second point, to provide affordable, environmentally safe, and secure pakka house and secure pakka PUCCA pakka house to every household. Pakka means of bricks. PUCCA pakka house to every household living below poverty line by 2022. Next, across the country except Delhi and Chandigarh.
Next point, to construct market, to construct 1 crore pakka houses in next 3 years. Next point, expected to boost job creation in rural areas. Boost job creation in rural areas. Next, important, beneficiaries are chosen according to socio-economic caste census of 2011. Beneficiaries are chosen according to socio-economic caste census of 2011. Next point, financial assistance will be provided. Financial assistance will be provided for the construction of dwelling units. For the construction of dwelling, DWELLING. For the financial assistance will be provided for the construction of dwelling units and upgradation of kacha houses. Next, entire payment will be done through a transparent DBT mode, direct benefit transfer, DBT mode, with Aadhaar linked bank accounts. Next, beneficiaries can avail loan of up to 1,20,000 rupees. 1,20,000 for construction of the houses in plain areas. Bracket 120. हाँ, अरे घर डो नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा होगा, एटलीस्ट प्रोवाइड इनको थोड़ा सा एक कमरा बना देंगे तो वो बहुत होता है. ब्रैकेट 1,30,000 फॉर हिली एरियाज. हिली एरियाज में मिलेगा 1,30,000 नॉर्मली. नेक्स्ट पॉइंट, provides for skilling 5 lakh rural masons, MASONS, by 2019. Next point, minimum size of the house is 25 square meter with hygienic cooking space. Next point, launched in 2016, replacing Indira Awas Yojana. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना, is it a loan given or is it a loan of up to loan is given. Next, नहीं आवास नहीं, हाँ आवास योजना प्रधानमंत्री है.
हाँ मतलब नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दिस इज अ स्कीम दैट वाज स्टार्टेड इन 2000. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सड़क योजना मीन्स टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी विद अ लार्जर एम की फार्मर की इनकम बढ़ सकती है, बिकॉज द फार्म प्रोड्यूस कैन बी सेल टू द मार्केट. तो रूरल और मार्केट एरियाज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम प्रधानमंत्री सड़क योजना इन 2000. Certain areas would be connected. कौन से एरियाज? फर्स्ट those areas where more population is living 500 and above. In the plain areas and 250 and above in other areas. देखो जी, launched in 2000. Second point, it is a centrally sponsored scheme. Third point, to provide all weather road connectivity to all eligible unconnected habitations. Unconnected habitations. Next point, connects habitations with a population of 500 and above in plain areas. Connects habitation with a population of 500 and above in plain areas. Next, 250% and above in hilly areas, tribal areas and desert areas. Next point, it also has an upgradation component. To ensure full farm to market connectivity. Farm to market connectivity. इसका मैं आई थिंक वो वापस ही दे वॉन्ट हैव टू गिव 1,20,000, तो वापस नहीं करना पड़ेगा, तो फिर भी चेक करूंगा. लॉन्ग टर्म के लिए वापस ही नहीं करेंगे. नेक्स्ट, अर्बन. This is a scheme that was started in 2016 and it is a scheme that is cluster based. Cluster based means they wanted to transform certain rural areas and those rural areas would be clubbed into a club together, and the aim would be to develop a smart villages in the long run, so that economically, socially, physically sustainable spaces can be developed. Certain villages would be clubbed together. Those villages in the plain areas, or for example, which have a population of 25,000 or to 50,000, and in the coastal and other areas which have a population of 5,000 to 15,000. Urban क्या है? Urban amenities has to be provided in the rural areas, with the aim to develop cluster of the villages. A scheme that was started in 2016. Cluster based approach मतलब कुछ villages को, every village do not have a population of up to 25,000. Certain villages which will club together to form a population of 25 to 50,000 उनको club करके aim is to develop and transform them into a smart village. देखो जी, launched in 2016. Second point, to transform rural areas to economically, socially and physically sustainable spaces. Next,
sustainable spaces. Also called, next point, also called Shyam Prasad Mukherjee Urban Mission, RURBAN, Urban Mission. It is a cluster-based approach to develop a cluster of smart villages. A cluster of smart villages. Next point. The state government would identify cluster population of 25,000 to 50,000 in plain areas, in plain and coastal areas, 25 से 50, 25,000 to 50,000 in plain areas and coastal areas, and 5,000 to 15, 5 से 15, 5,000 to 15,000 in desert, hilly and tribal areas. In desert, hilly and tribal areas. Next. Sansad Adarsh Gram Yojana. Sansad Adarsh Gram Yojana. सांसद क्या होता है? MP. ठीक है. The scheme was launched in 2014, in which the MP would be selecting one villages with a population of 3,000 to 4,000 in plain areas or 1,000 to 3,000 in a hilly areas. किसके लिए? So that better education, better health or better nutrition can be provided. One clause is there. They cannot choose a village of their to which they belong or to which their spouse belong. अपना spouse का village नहीं choose कर सकते. Not only to improve education health but also to provide better services for the midday meal scheme. Agar for example if you talk about education, the aim would be to develop smart school in those areas where better IT can be provided to the children. The same can be implemented for the health sector also, जहाँ पे उनको better health facilities provide करी जाएंगी. सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में लॉन्च हुआ. कुछ villages को as a model village develop करना है. MPs choose करेंगे, but MP cannot select their own village or other spouse का village. Focus areas education, nutrition or for example health, these would be overall improve करने का. आधार का भी इसमें enrollment बढ़ जाएगा. Right. Good. To ensure integrated development of the selected villages, across multiple areas such as agriculture, health, education, etc. Next, launched on the birth anniversary of J.P. Narayan. Next point, MP member of parliament. MP are required to pick one village with a population of 3,000 to 4,000 in plain areas and 1,000 to 3,000 in hilly areas.
within a month of the launch. Within the month of the launch of the scheme. Next point. MPs cannot pick villages which belong to themselves or spouses. Cannot pick villages which belong to themselves or spouses. Next point. Draft village development plan. Next point. Draft village development plan motivates the local people to participate in the growth. Next. Improving standard and quality of midday meal schemes. Standard and quality of midday meal schemes. Next. Improving Aadhaar enrollment. Next. Setting up smart schools. With IT enabled classrooms and e-libraries. Next point. Also focus on panchayat infrastructure improvement. Next point. District collectors will carry ground level surveys to monitor the progress. Launched in 2014. The amount of money you will be getting from this scheme from the salary or सैलरी से कौन देगा? सैलरी से थोड़ा सा काम होते हैं. अलग से भी मिलेगा. कुछ कंपोनेंट सिमिलर होते हैं, वो जुड़ जाते हैं. नाउ नीलांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट. There is another scheme which the government has launched, that is प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड कंपोनेंट को फुलफिल करने के लिए ये स्कीम काम करती है. नीलांचल नेशनल वाटरशेड इरिगेशन के लिए है. नीलांचल इरिगेशन है, जब वाटरशेड मैनेजमेंट है उसी के लिए. वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स यू विल कंट्रोल द सरफेस रन ऑफ द वाटर सो दैट द ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड. द ग्राउंड वाटर पे ज्यादा आपको पानी मिल सके. दिस इज अ स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड इन 9 डिफरेंट स्टेट्स इन द कंट्री विद द ओवरऑल एम to improve the livelihood of the people, those living in the rural areas, and with a larger aim to develop forward and backward linkages. 9 states में लगी हुई है. A scheme that is sponsored by the World Bank. World Bank इसको स्पॉन्सर कर रहा है. वाटरशेड कंपोनेंट कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है. करो जी. Aims to fulfill the watershed component of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. Second point, to reduce surface runoff of water
to reduce surface runoff of rainwater, comma, increase groundwater levels and better water availability in rain-fed areas. Third point important, 50% project cost 50 by World Bank loan. Project cost by World Bank loan. Next, watershed plus approach, comma, support improved equity, comma, livelihood and incomes through forward linkages. Next point, implemented across 9 states, that is Andhra Pradesh, Telangana, MP, Maharashtra, Gujarat, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan. Next, it is a new version of watershed management program. New version of watershed management program. Next, National Social Assistance Program. A program which was started in 1995, 100% centrally sponsored program is basically for the BPL household below poverty line. What it would be doing? It would be providing support to the aged person, to widow or to any other families जिनका प्राइमरली ब्रेड विनर की डेथ हो चुकी है. इस स्कीम के 5 अलग और कंपोनेंट है. दे आर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम ओल्ड एज के लिए, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम विडो के लिए, डिसेबिलिटी के लिए इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा. दीज आर द वेरियस स्कीम्स व्हिच आर अ कंपोनेंट ऑफ दीज. जब बाद में करेंगे तो अलग अलग स्कीम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी. देखो जी, launched in 1995. Second, to provide support to aged persons, comma, widows, comma, disabled persons, and those families whose primary breadwinner dies. Next, belonging to BPL households comprises of 5 schemes. First, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme.
नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। नेक्स्ट, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। नेक्स्ट स्कीम अन्नपूर्णा स्कीम। स्कीम है दो मिनिस्ट्री का, एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एक डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनका कंपोनेंट है। किसको दी जाएगी? इट वुड बी गिवन टू द सीनियर सिटीजन जिनकी यूज एज विद बी मोर देन 65 ईयर्स एंड हु आर नॉट गेटिंग पेंशन अंडर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। क्या किया जाएगा इनके लिए? फूड ग्रेन्स ऑफ 10 अप टू द फूड ग्रेन्स ऑफ 10 kg, अमाउंट ऑफ 10 kg वुड बी गिवन टू दीज पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको अन्नपूर्णा स्कीम के अंडर खाना दिया जाएगा 10 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन लोग होंगे? दोज हु आर नॉट बीन कवर्ड अंडर एनी अदर पेंशन स्कीम। देखो जी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट, सीनियर सिटीजन्स of 65 years and above who are not getting pension under National Old Age, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, NOAPS, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, are eligible. Next, provides 10 kg of food grains per person, 10 kg of food grains per person per month free of cost. 10 kg of food grains per person per month free of cost. Revise करो जी what has been written and taught. Revise it once. हाँ जी, इरिगेशन का काम हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने कैनाल बना दिया, या फॉर एग्जांपल कुछ कहीं बांध लगा दिया, या कुछ ऐसी इसी तरीके से कुछ भी कर दिया, इरिगेशन के अंदर ही आएगा, एग्रीकल्चर इरिगेशन। दोबारा बोलो।
नहीं, वो तो एक कॉम्पोनेंट होगा छोटा सा, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ इरिगेशन भी तो चाहिए ना, वाटरशेड मैनेजमेंट भी तो चाहिए, वो सब कुछ यही लोग करेंगे। वो आपको आवास योजना दिखाई दी ना, गांव में घर बनाना है, वहां से 90 से 95 दिन 90 to 95 डेज भी आप मनरेगा के वर्कर्स को यूज कर सकते हैं। Next, various exercises. First, naval exercises. Make a table. Exercise, name of exercise and country. First is Varuna. पहले एक्सरसाइज का नाम लिख लो और बाद में 2 कंट्रीज होगी या 3 हो सकती है। टाइटल की कुछ जरूरत नहीं है, लिख ले इतना बहुत है। वरुणा, इंडिया एंड फ्रांस। श्रीनेक्स, SLINEX, इंडिया श्रीलंका। इंदिरा, इंडो रशिया, इंडिया रशिया। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना, इंडिया चाइना। नेक्स्ट, मालाबार, इंडो US जापान। सिम्बेक्स, इंडिया सिंगापुर। SIMBEX, इंडिया सिंगापुर। कोंकण, इंडिया ब्रिटेन। ऑसेंटेक्स, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। कॉर्पत, CORPAT, इंडिया इंडोनेशिया। सहयोग, SAHYOG, इंडिया साउथ कोरिया। संप्रीति, इंडिया बांग्लादेश। नसीम अल बशीर, इंडिया ओमान।
इंडिया ओमान, Rashid, BASHIR. Next, Air Force exercises. Air Force exercises. Air Force exercises. First, अरे कौन अंग्रेज हो गया है? कौन है? ईशान तुम थे? चलो, इंद्रधनुष, और रेनबो, इंद्रधनुष और रेनबो, इंडो यूके, गरुड़, फ्रांस, एविया इंद्रा, रशिया, रेड फ्लैग, यूएस, इंडो यूएस, डेजर्ट ईगल, इंडिया यूएई, ईस्टर्न ब्रिज, इंडो ओमान, प्रबल दोस्तक, इंडिया कजाकिस्तान, KAZ, इंडिया कजाकिस्तान, PRABALDOSTYAK. नेक्स्ट, आर्मी एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, मित्रा शक्ति, मित्रा शक्ति, श्रीलंका, इंडो श्रीलंका, शक्ति, फ्रांस, फ्रांस, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया, इंडो मंगोलिया, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, इंडो यूएस, सूर्य किरण, इंडो नेपाल, लमिटे, इंडिया सचल्स, अजय वॉरियर, AJEYA, इंडो यूके, इक्विवेलेंट, इंडिया मालदीव्स, इंडिया मालदीव्स. नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसीज आर देयर. कितने तरह की होती है? 9 तरह. कौन कौन सी? डिप्लोमेसी कितने तरह की होती है? किस किस तरह की होती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होती है, और कौन सी होती है? सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल की। अच्छा, और डिफेंस लेवल पे जो देखो जी, डिप्लोमेसी 9 टाइप्स. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. ट्रैक 1, मेगा कॉलम. ट्रैक 1, उसके आगे क्या होता है?
Government to government. Track 2, professionals. Track 2. Track 3, business. Track 4, private citizens. Track 5, research, training and education. Track 6, peace activists. Track 7, Radhima, religion. Shri, he was sent to Iraq and various other countries to overcome the problems which are there with various countries. India and Nepal के relation जब खराब हो गए थे तो श्री को भेजा गया था, because that is basically a Hindu country वहाँ पे, तो इसलिए श्री को भेजा गया कि आप रिलेशन अच्छे करके रहो, अच्छे प्रवचन देकर रहो. बाबा रामदेव को भेजा था योगा सिखाने, सही है? हाँ, ये बोलो, गलत किसने बोला? ये गलत है. नेक्स्ट, ट्रैक 8, बाबा रामदेव वहां से क्या सीख रहा है? और कई कपड़े वपड़े जो डाल के भागा था, सूट सलवार, वो तो नहीं सीख रहा है वहां से. चलो, ट्रैक 8, फंडिंग. ट्रैक 9, इनर सर्कल मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन. Inner circle media and public opinion. Next, सिल्क. ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका सिल्क के ऊपर. How many varieties of silk are there? गलत हो गया. 5 varieties of silk are there and India is the only country जहां पे मिल चुका है. ठीक है, और है all 5 बिल्कुल तभी. ठीक है. Other than they are mulberry, tropical tussar, oak tussar, eri and muga. Other than the mulberry, all other are combined and they are called as Vanya silk. India is the second largest producer of silk after China and second largest consumer also. देखो जी, types of silk. First, mulberry. Second, tropical tussar. Third, oak tussar. Fifth, eri. Fourth is eri and fifth muga. Next point, silk other than mulberry are all grouped together and are known as Vanya silk. VANYA. Next point. India is the second largest producer of silk in world. India is the second largest producer of silk in the world after China, and also the second largest consumer. Next. India is the only country that produces all 5 varieties of silk
and holds all 5 varieties of silk and holds global monopoly for the production of Muga silk, MUGA. Next, almost all Indian states except Rajasthan and Gujarat are involved in the production of one or another variety of silk. One or another variety of silk. Next point. Major mulberry silk producing states are Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir. Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir. Full stop. Together they account for 96%. Together they account for 96% of the country's total mulberry raw production of silk. 96% of country's total mulberry raw production of silk. Next point. India and China account for more than 98% of global silk production. Of global silk production. Next, lakh. लाख क्या होता है? अरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, हाँ वुड वाला, हाँ वही जो पेड़ से निकलता है ना थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड. और जिसके कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ से जैसे लाख निकलती है, उसकी बैंगल्स या कुछ और चीजें बनती है. एंड इवन फॉर एग्जांपल ज्वेलरी मेड फॉर एग्जांपल एट वेरीज फैब्रिक डाइंग करने के लिए और वुड पॉलिशिंग के लिए, टेनरी के लिए या डाइंग ऑफ लेदर के लिए, दैट लाख इज बीइंग प्रोड्यूस. इंडिया इज अ कंट्री, अरे चुप हो जाओ, बाद में ये चीज मिलती नहीं है. दिस वॉज द ओनली वन लाइन विच आई पिक्ड फ्रॉम कुरुक्षेत्र. और आप पूरा कुरुक्षेत्र पढ़ जाओगे, मिलेगा नहीं है, क्योंकि वो सोते सोते पढ़ोगे और फिर बोलोगे पता नहीं यूपीएससी का दिमाग उलझी का, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लगे लाख भाग के बारे में. जितना पढ़ा रहा हूं कर लो, सफिशिएंट रहेगा, सफिशिएंट से भी ज्यादा रहेगा. इंडिया इज अ कंट्री विच इज होल्डिंग अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ लाख. वेरियस कंट्रीज स्टेट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस आर, सबसे ज्यादा होता है झारखंड में, फॉलोड बाई छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. लिखो जी. इंडिया होल्ड्स monopoly in the world trade for natural resin and gums. Natural resin, RESINS, and gum as LAC, LAC, Karya gum, KARAYAGUM, and guar gum. Resin and gum as LAC, LAC, comma, Karaya, KARAYA, Karya gum,
and GUAR, GUAR. Next point. 5 Indian states contributes about 95% of India's log production. Full stop. Jharkhand 58%, followed by Chhattisgarh, MP, Maharashtra, Odisha. Next, used for dash, very important, dyeing fabric, ये पूछा जा चुका है, comma, filling gold and silver ornaments, filling gold and silver ornaments, comma, bangle making, एम्स के पास कौन सा है? दिल्ली हाट. अरे कहाँ IN है, कहाँ था उधर जाएंगे, अच्छी जगह पे जाना चाहिए ना. IN दिल्ली हाट, ठीक है. अरे दिल्ली हाट जाने के बाद बंदा एम्स में जाता है. ठीक है, चलो वहां पे ही गो टू दिस दिल्ली हाट. वहां पे आस्क दिस दोस्त द फीमेल्स दे वुड बी सिटिंग, वहां उनको बोलो कि वो बैंगल्स बना के दे देंगी. एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम दे विल मेक अ बैंगल्स फॉर यू, लाख की बैंगल, और उस पर डिजाइन भी बना के देंगी. कभी जाना. ये तो किस्मत डिपेंड करती है. वुड पॉलिशिंग, comma, tannery, TANNERY, tannery for dyeing of leather, comma, cosmetics. Next point. Large insects are oviparous. OVAVI POOROUS. क्या होता है ये? Oviparous. OVOVAVIPOROUS in nature. Next heading, Huntington disease. Next heading, Huntington क्या होता है? जब ओडर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए. देखो जी, प्रॉब्लम विद odor, ODOUR, detection. Next, indigenous breeds of cattle. ये क्वेश्चन आ चुका है. indigenous breeds of cattle, कितनी कैटल था जो हिंदुस्तानी है? पहले साहिवाल, सेकंड गिर, कनकरेज, नेक्स्ट राठी, पारकर एंड रेड सिंधी. Next, Cabul Lamjo. Next heading,
LAMJAO. National Park. Dash. It is world's largest and only floating national park. Floating national park. Second point, lies in the southern zone of Manipur. Animals found are Indian python, sambar, hog deer, जा चुका है, golden cat, large Indian civet, CIVET, viper, brow antler deer, next point, Loktak Lake is known as bird's paradise. ये पूछा जा चुका है, इसके आगे वाला point is known as bird's paradise. Birds found are black kites, माइना, ये पूछा गया था, skylark, East Himalayan kingfisher, रिवाइज करो ये इसको।
तो इंडिजिनस है। हाँ नहीं नहीं, कैसे? अमेरिका, हाँ बिल्कुल इंडियन नहीं है, नहीं है, इंडिया का नहीं है, बस इतना पता है, अब कहाँ से आया वो नहीं पता। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, छोटा सा टेबल बना लो, 7 to 8 लाइन्स। बंदनी, राजस्थान, बंदनी राजस्थान। कंठा, वेस्ट बंगाल। एक कैंठा नहीं, कंठा। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, हाँ सब कुछ डालने वाला ही है। तंचोई, गुजरात। कांजीवरम, कांजी KNJVARM, तमिलनाडु। कोटा डोरिया, राजस्थान। आइकार, उड़ीसा। नेक्स्ट, वाइफेक्स। ये इकट्ठा ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। व्हाट इज इट? इज बेसिकली फॉर फोरकास्टिंग विंटर फॉग इन अ टाइम एंड स्पेशल मैनर। 6 आवर्स के लिए फोरकास्टिंग किया जाएगा, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर द एविएशन ट्रांसपोर्ट, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने काफी बड़ा स्टैच्यू लगाया है, और चाइना वालों ने क्या किया, चाइना वालों ने एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए वैसा ही कुछ और लगा दिया। एयर प्यूरिफायर लगाया चाइना ने, उसके काफी कम पैसों का लगा, बहुत कम पैसों का लगा एयर प्यूरिफायर। द एनवायरनमेंट वुड बी क्लीन्ड जहां जहां उस सिटीज में वो एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं, फर्स्टली। सेकेंडली, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन कार्बन वुड बी कैप्चर्ड, कार्बन वुड बी कन्वर्टेड टू डायमंड्स। हम मूर्तियां लगा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, और वो कुछ एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। कंट्री से कंट्री का फर्क है। चलो जी, वाइफेक्स। फोरकास्टिंग ऑफ विंटर फॉग on various time and spatial scale. Winter fog on various time and spatial scale. वाइफेक्स प्रोजेक्ट कर लो, वाइफेक्स प्रोजेक्ट। स्पेशल, स्पेस, SPATIAL। सेकेंड पॉइंट, फोरकास्टिंग वुड बी डन फॉर 6 hours. Forecasting would be done for 6 hours. Third point, it would reduce the adverse effect of fog. The adverse effect of fog on aviation, transport, and loss of human life due to accidents, and loss of human life due to accidents. Next, major tribes in India. Make a table, long one.
यहाँ पे नेम और स्टेट. फर्स्ट, अबोर्ड इस टेबल से ही बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार. स्टेट असम एंड अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट, अधि, सप्तमी एंड कंपटी. All the three. In Arunachal Pradesh, Adi, Aptami and Kampati. Next, Angami and O in Nagaland. Next, Badagas, Badagas, Tamil Nadu. Next, Bega and Beats. State, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat. Next, Bhutias, Sikkim. Bihar, Next, Bodos, Assam. Chanchus, Andhra Pradesh. Garo Khasi, Meghalaya. Gons, MP, Bihar, Odisha, Andhra. Irulas, Andhra. Irulas, Tamil Nadu. Jaravas, Andaman. Kanis, Kerala. Next, Kachari and Karbi, Assam. Next, Khons, Odisha. Coals, MP. Next, Cookies, Manipur. Next, Lepchas and Rongpa. Sikkim. Next, Lushai, Tripura. Metis, Meteis. Manipur, Nagaland. Meena, they are not a why.
But when this, even the news came, maybe some type of I'll tell you one thing. For example, that depends upon a state to state. Even for example, OBC category, the Jats in Punjab, they are not considered as OBC, but they are considered as OBC in Rajasthan. Or for example, the Guptas in Punjab, they are considered general categories. Go to Bihar, they will become OBC. That makes a difference. कोई फर्क नहीं है. That is next. Meena, Rajasthan. Miri, Assam. Mundas, Bihar. Orans, Little Andaman. Orans is Bihar and Odisha. Bihar, Odisha. Next, Onges. ONGES. Little Andaman. Rabhas. Assam. Next, Santhal. SANTHAL. Bihar, West Bengal. SANTHAL. Santhal. Next, Sema. Nagaland. Shompen. Great Nicobar Island. Tagin. Arunachal Pradesh. Todas. Tamil Nadu. Murales. Kerala. And Zalian. Nagaland. Kerala. Zaliang, Nagaland. पढ़ो जी इसको. जोड़ा बोल जोर से. मैं बताता हूँ. कोई भी ट्राइब जो होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे रहेगी, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है. ऐसा स्प्रेड तो हर जगह पे है, पॉपुलेशन स्प्रेड है, उस वजह से जहाँ पे वो ओरिजिन हुआ कहाँ पे चल रहे वो इम्पोर्टेंट.
So that was all for today. इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे. आज क्या दिन है? जो भी आज दिन है नेक्स्ट फ्राइडे को ही होगी इस चीज़ का. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.